आपण समस्त आम यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टूडेंट्स हब रे स्वागत। आज आम ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा। देखि पारुथिबे लर्निंग एनवायरनमेंट, टीचर सेंटर, स्टूडेंट सेंटर एंड लर्निंग सेंटर ए सिलेबसटा एसएसबी टीजीटी रे अछि एवं आउ आसुथिबा जेटी एग्जाम, स्टेट एग्जाम एवं अन्य समस्त एग्जाम पई यह बहुत हेल्पफुल हेबो। तबे चलंतु क्वेश्चन आरकु जिबा। प्रथम क्वेश्चन कोन अछि देखिबा। What is the primary objective of organizing a classroom physical environment? Option is to maximize the number of decorative elements, to minimize student movement completely, to support instructional goal and facilitate smooth transitions, to ensure the teacher can see the whiteboards at all time. Right answer कौन होगा? गोटे क्लासरूम रे किपरि गोटे शारीरिक परिवेश किपरि होगा उचित तार मुख्य उद्देश्य कौन क्लासरूम रो एमिति प्रश्न अछि। तो यार सटीक उत्तर ऑप्शन सी। गोटे ऑप्शन सी हो सटीक उत्तर। गोटे सपोर्ट टू सपोर्ट इंस्ट्रक्शनल गोल एंड फैसिलिटेट स्मूथ ट्रांजिशन। तेणु गोटे उद्देश्य एवं सब प्रकार सुविधा मिलुवा हेबा उचित, साहाय्यकारी हेबा उचित। परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न अछि व्हिच फैक्टर इज मोस्ट क्रिटिकल व्हेन ऑर्गेनाइजिंग डेली क्लासरूम रूटीन? ऑप्शन सी प्रेडिक्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी फॉर स्टूडेंट्स, चेंजिंग द रूटीन डेली टू कीप स्टूडेंट्स एंगेज्ड, रिलाइंग एंटायरली ऑन वर्बल रिमाइंडर्स रेदर देन विजुअल क्यू, एंश्योरिंग द टीचर डूज ऑल द फिजिकल क्लीनअप। राइट आंसर कौन हो? सठिक उत्तर कौन हो ना यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए प्रेडिक्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी फॉर स्टूडेंट। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। व्हेन स्ट्रक्चर ए लेसन व्हाट डू द टर्म पेसिंग रिफर्स टू? ऑप्शन अच्छी हाउ फास्ट द टीचर कैन स्पीक ड्यूरिंग ए लेक्चर, द स्पीड एट व्हिच ए लेसन प्रोग्रेसेस एंड चेंजेस एक्टिविटीज, द फिजिकल स्टेप्स ए टीचर टेक्स अक्रॉस द रूम, द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन ए टेक्स्ट बुक चैप्टर। राइट आंसर हम कौन? यह राइट आंसर ऑप्शन ए। सॉरी ऑप्शन बी है राइट आंसर। द स्पीड एट व्हिच ए लेसन प्रोग्रेस एंड चेंजेस एक्टिविटीज। केते स्पीड रे गोटे शिक्षाटा गति करूची एवं तार परिवर्तन होची ताहा निर्भर करूची गोटे शिक्षार तार पेसिंग रो अर्थ सेहा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ स्कैफोल्डिंग व्हेन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्टिविटीज? गोटे स्कैफोल्डिंग जार उद्देश्य कौन? गोटे लर्निंग रे गोटे सांगठनिक शिक्षा रे स्कैफोल्डिंग रो उद्देश्य कौन? ऑप्शन अछि टू आइसोलेट स्ट्रगलिंग स्टूडेंट फ्रॉम देयर पीयर्स, to provide temporary support that is gradually removed as independence grow, to grade students based on their initial attempts at a text, to extend the length of a lecture unnecessary. Right answer कौन हम जानि छु ना ए स्कैफोल्डिंग रो उद्देश्य हला टेम्पोररी सपोर्ट दबाटा जहा द्वारा से ग्रेजुअली गोटे इंडिपेंडेंस जाबे बढ़ी पारिबो गोटे स्टूडेंट। देन ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि in classroom layout design what should be minimized to prevent behavior disruptions? Option से अच्छी student to student visibility, clear pathway to high traffic zones, blind spots where the teacher cannot see students, access to learning materials. Right answer होगा option C right answer। blind spots the teacher cannot see students। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल फोकसेस ऑन प्लानिंग द फाइनल असेसमेंट बिफोर क्रिएटिंग लर्निंग एक्टिविटीज? को इंस्ट्रक्शनल डिजाइन टा फोकस करूची गोटे प्लानिंग एवं फाइनल असेसमेंट पूर्वरु माने गोटे फाइनल असेसमेंट कोड़ा डिसाइड करूची को प्रकार डिजाइन मॉडलटा फोकस करूची फाइनल असेसमेंट गोटे कहा पूर्व ना लर्निंग एक्टिविटी पूर्व। ऑप्शन अच्छी ट्रेडिशनल फॉरवर्ड प्लानिंग,
to flip model, backward design, adare instruction sequencing. यार राइट आंसर हो ऑप्शन सी बैकवर्ड डिजाइन गोटे बैकवर्ड डिजाइन टा एमती राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इनवॉल्व ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग बेस्ड ऑन व्हिच 3 स्टूडेंट्स वेरिएबल ऑप्शन सी एज जेंडर एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अटेंडेंस बिहेवियर एंड पार्टिसिपेशन readiness interest and learning profile grade level test score and setting preference माने गोटे ऑर्गेनाइजिंग सांगठनिक शिक्षा रे क्यों प्रकार स्टूडेंट क्यों 3 प्रकार स्टूडेंट हवा उचित तो आमे जानि छु ना गोटे सांगठनिक शिक्षा रे गोटे प्रथमे रेडीनेस होबार कथा गोटे प्रस्तुति रहबार कथा तापर गोटे इच्छा शक्ति रहबार कथा एवं तार लर्निंग क्वालिटी थिया उचित लर्निंग प्रोफाइल थिया उचित तेन ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए ट्रांजिशन स्ट्रेटजी व्हेन ऑर्गेनाइजिंग ए स्कूल डे गोटे ट्रांजिशन स्ट्रेटजी रे जेते बेले ऑर्गेनाइजिंग स्कूल डे रे गोटे तार मुख्य ट्रांजिशन स्ट्रेटजी रो मुख्य उद्देश्य काना हो उचित ऑप्शन सी टू गिव द टीचर ए प्रोलॉन्गेस्ट ब्रेक बिटवीन सब्जेक्ट टू मूव स्टूडेंट्स एफिशिएंटली from one activity to the next with minimal disruption, to stay students on their memory of the previous lesson, to separate students into high and low ability tracks. यहाँ right answer होगा to move students efficiently from one activity to the next with minimal disruption। तेनु गोटे काम आ गोटे काम को गोटे स्टूडेंट करिवो ता होची ट्रांजिशन स्ट्रेटजी करा जिवो माने गोटे ट्रांजिशन केते बेलो गोटे शिक्षा जहा ग्रहण कला गोटे स्टूडेंटा तार जेते काम करूची जेते शिखुची शिखिला पर आ गोटे नवा जिनिस से जानि परबा नवा जिनिसटा देखिला एवं जानला ता होची ट्रांजिशन स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हेन ऑर्गेनाइजिंग डिजिटल लर्निंग स्पेसेस व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर एक्सेसिबिलिटी गोटे डिजिटल लर्निंग रे कोटा मेन फैक्टर करूची मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर एक्सेसिबिलिटी रो ऑप्शन से यूजिंग कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड फोल्डर्स मिनिमाइजिंग विजुअल एनिमेशंस एंड पॉपअप्स इनटू इनिशिएटिव नेविगेशन एंड क्लियर लेवलिंग रिसोर्सेस रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू द प्लेटफॉर्म आउटसाइड ऑफ स्कूल स्टडी ऑफ आवर्स राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हम ऑप्शन सी हम राइट आंसर। इनिशिएटिव नेविगेशन एंड क्लियर लेवलिंग रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ असेसमेंट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस देखो ड्यूरिंग समय गोटे शिक्षा चलुवा समय को प्रकार इंस्ट्रक्शनल को प्रकार असेसमेंट करा जाए को प्रकार मूल्यांकन करा जाए ऑप्शन सी समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट डायग्नोस्टिक असेसमेंट नॉम रेफरेंस असेसमेंट आम जानूँ कौन शिक्षण चलुवा समय आम फॉर्मेटिव असेसमेंट करूँ ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन What is a key challenge when organizing multi-grade or split level classroom? गोटे ऑर्गेनाइजिंग आउ मल्टीग्रेड क्लासरूम रे कोडा गोटे बड़ चैलेंज ऑप्शन अच्छी स्टूडेंट्स आर ऑल एग्जैक्टली द सेम एज ब्लेसिंग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर वन ग्रुप व्हाइल मैनेजिंग इंडिपेंडेंट वर्क फॉर अनदर फाइंडिंग टेक्स्ट बुक्स दैट कवर्स आइडेंटिकल टॉपिक्स फॉर ऑल एजेस preventing students from talking to each other at all time राइट आंसर कौन हम ना यार राइट आंसर हम ऑप्शन बी बैलेंसिंग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर वन ग्रुप while managing independent work for another ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि when ongoing instruction time what does time on text or engage time measures option C the total duration of the school day the amount of time students are actively paying attention and working on learning goals the time spent grading
efforts by the instructor, the minutes dedicated to recess and lunch transition. Our right answer of option B is right answer. The amount of time students are actively paying attention and working on learning goals. Next question को जिबा, which educational philosophy is most deeply aligned with a teacher centered classroom? गोटे टीचर सेंटर क्लासरूम रे को प्रकार अलायंस रोचे? ऑप्शन अच्छी प्रोग्रेसिविज्म, एसेंशियलिज्म, एक्साइटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। को प्रकार टीचर सेंटर रे जाउछि? ऑप्शन बी एसेंशियलिज्म जाउछि। देन ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जिबा, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द टीचर इन ए ट्रेडिशनल टीचर सेंटर paradigm? Option A, co-learners who explore topics alongside students, a facilitator who sets up self-guided sessions, the primary source of knowledge and director of classroom activity, an observer who relay intervenes in students' discussion. Right answer कौन होना? Right answer है option C, the primary source of knowledge and director of classroom activity. Option C right answer. Next question, which of the following is a classic example of teacher centered instructional method? टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शनल मेथड कोटा गोटे उदाहरण? ऑप्शन अच्छी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, रेसिप्रोकल टीचिंग, ओपन इंक्वायरी रिसर्च। ना गोटे टीचर सेंटर रे जाई थाए ऑप्शन बी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, पूरा सूचना देवा, इंस्ट्रक्शन बा डायरेक्ट कहवा, इंस्ट्रक्शन दवा, निर्देश करवा, ताहा होची शिक्षक सेंटर रे जाउची बा टीचर सेंटर जाउची। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए मेजर क्रिटिसिज्म ऑफन लेवल अगेंस्ट प्योरली टीचर सेंटर एनवायरनमेंट? ऑप्शन सी, इट मेक्स क्लासरूम मैनेजमेंट टू डिफिकल्टी टू हैंडल, students may become passive recipient of information rather than activity critical thinkers, it requires too many complex hands-on materials, it result in too much variation in what individual students learn. Right answer कौन होना? Right answer होगा ऑप्शन बी, students may become passive recipient of information rather than active critical thinkers. ऑप्शन बी है राइट आंसर यार। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन अछि, which seating arrangement is most common and effective of teacher centered lecture? को प्रकार seating arrangement गोटे प्रभावशाली? ऑप्शन सी, large curricular configuration, small table cluster of 4 to 5 students, traditional grid row facing the front board, random perimeter seating with clear center floor. राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रेडिशनल ग्रिड रो फेसिंग द फ्रंट बोर्ड रे बा पूर्वतन जो गोटे क्लासिकल बा ट्रेडिशनल जो परंपरा बा चली आई से प्रकार हिसाब माने फेसिंग मु करी देखिबा गोटे ग्रिड रो फेसिंग फ्रंट्स करबा ता होची टीचर सेंटर रे प्रभावशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, in a teacher center framework how is communication typically structured? टीचर सेंटर की प्रकार कम्युनिकेशन रहता कथा? ऑप्शन अच्छी प्राइमरी स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स, वन टू मेनी फ्लोरिंग, predominantly from teacher to students, many to one where students lead the lecturing process, exclusively lateral through digital message boards. यार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वन टू मेनी फ्लोइंग, predominantly from the teacher to students. Next question, when a teacher center approach highly effective and appropriate? कोटा टीचर सेंटर रे बहुत प्रभावशाली? ऑप्शन डी, when students need to design their own scientific experiment, when introducing foundational highly structured actual information to a large group, when the goal is to develop peer negotiation and collaboration skills, when students are pursuing independent self-directed research projects. राइट आंसर कौन हो ना? राइट आंसर हो ऑप्शन बी, when introducing foundational highly structured factual information to a large group, then option B right answer. Next question, what type of assessment dominant in a strictly teacher centered classroom?
टीचर सेंटर क्लासरूम रे को प्रकार असेसमेंट बहुत देखा जाए ऑप्शन सी स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट रिफ्लेक्शन प्री रिव्यू डिजिटल पोर्टफोलियो स्टैंडर्डाइज्ड समेटिव पेपर एंड पेंसिल टेस्ट ऑनगोइंग कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट रुब्रिक्स यार राइट आंसर हो ऑप्शन सी स्टैंडर्डाइज्ड समेटिव पेपर एंड पेंसिल टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा रोट मेमोराइजेशंस एंड रिपीटेटिव ड्रिल एंड हॉलमार्क स्ट्रैटेजी ऑफ व्हिच मॉडल रोट मेमोराइजेशन बा घोषी को मन रखिबाटा को प्रकार मॉडल देउची ऑप्शन सी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन डिस्कवरी लर्निंग एक्सपीरियंशियल एजुकेशन यार राइट आंसर हो ऑप्शन सी नहीं सॉरी ऑप्शन बी टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन देउची ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज स्टूडेंट मोटिवेशन जनरली categorized in heavily teacher centered environments option C strictly instinct driven by individual curiosity highly instinct driven by grade praise or avoiding negative consequence non existence across all demographics entirely peer dependent right answer हो option B highly instinct driven by grade praise or avoiding negative consequences then option B right answer। Next question the concept of teacher at the stage on the stage refer directly to student center facilitation station rotation model teacher center instruction collaborative teamwork structure right answer of option C teacher center instruction होबा तेनो teacher center instruction टा ए stage and stage रे refer करूची। Next question student center learning is rooted heavily in which psychological theory of learning student center को प्रकार psychological theory जाउछ ऑप्शन सी behaviorism constructivism classical conditioning functionalism very best क्वेश्चन एटा ना जो हमर टीचर सेंटर टा कंस्ट्रक्टिविस्ट रे जाउछ कंस्ट्रक्टिविज्म रे त ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन which phrase best describe the teacher's role in a student center classroom स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम रे गोटे टीचर रोल कौन ऑप्शन सी द स्टेज ऑन द स्टेज द गाइड ऑन द साइड द डिसइंटरेस्टेड बायस्टैंडर द अथॉरिटी एंड डायरेक्टर राइट आंसर हम कौन ना राइट आंसर हम ऑप्शन बी गोटे गाइड हिसाब से काम करिवो मार्गदर्शक हिसाब से टीचर काम करिवो कोइथि ना स्टूडेंट सेंटर रे ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट सेंटर लर्निंग गोटे स्टूडेंट सेंटर लर्निंग रे तार कोटा सब गुण रहउची ऑप्शन अछि स्टूडेंट सिट क्विकली एंड टेक नोट्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ क्लास द करिकुलम इज स्ट्रिक्टली यूनिफॉर्म विथ जीरो स्टूडेंट्स चॉइस एक्टिव एंगेजमेंट कोलैबोरेशन एंड स्टूडेंट्स वॉइस और प्रियोराइज्ड असेसमेंट और लिमिटेड टू मल्टीपल चॉइस फाइनल एग्जाम्स राइट आंसर कोन हो ना राइट आंसर ऑप्शन सी active engagement collaboration and students voice or pairized। Next question what type of classroom layout best supports student centered learning student centered learning को सपोर्ट करबा पय गोटे बेस्ट लेआउट कोन ऑप्शन छी rigid row facing forwards individual studies cells blocking for view flexible setting configuration and grouped clusters empty rooms without tables or workspace surface right answer कोन होबो ना right answer होबो option C flexible setting configuration and grouped clusters। next question को जबा next question अछि what is an example of an instructional method belonging to the student center approach scripted whole class lecturing problem based learning silent textbook reading drill rote spelling flashcard और स्टूडेंट सेंटर रे को प्रकार मेथड टा निर्भर कोछि राइट आंसर हो ऑप्शन बी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज असेसमेंट टाइपिकली स्ट्रक्चर इन ए स्टूडेंट सेंटर फ्रेमवर्क solely determined by mid-terms of finals, vary incorporating authentic performance-based text and self-reflection. Administrator, without providing feedback to the students,
designed to rank students from highest to lower score publicly. Right answer of option B, vary incorporating authentic performance based text and self reflection. Next question, what does metacognition mean? Metacognition अर्थ कौन? ऑप्शन सी memorizing text for examination, thinking about one's own thinking, a method, classroom discipline, digital program skill. तेनो metacognition में होचे thinking about thinking. ऑप्शन बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हो जिबा, in a student centered environment what happens when students disagree during a group text? गोटे स्टूडेंट सेंटर एनवायरनमेंट है कौटा माने गोटे स्टूडेंट सेंटर रे को प्रकार माने गोटे स्टूडेंट जदि ग्रहण न करूछि ताहले काण हबो? ऑप्शन सी, द टीचर इमीडिएटली असाइन ग्रेड of 0, द प्रोजेक्ट इज कैंसल्ड, स्टूडेंट आर एनकरेज्ड टू नेगोशिएट एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, द टीचर डिसाइड्स हु इज राइट विदाउट डिस्कशन. एरो राइट आंसर हबो ऑप्शन सी राइट आंसर, स्टूडेंट आर एनकरेज्ड टू नेगोशिएट एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. माने छात्र मानकू उत्साह देवार कथा माने सेपरी काम करो नेगोशिएशन करबा पय. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ गिविंग स्टूडेंट्स वॉइस एंड चॉइस इन देयर असाइनमेंट? कोटा लाभ है गोटे छात्र मानकू निजो हिसाबे वॉइस एंड चॉइस देबो ताले कोन होता है? ऑप्शन सी, इट रिड्यूस ग्रेडिंग टू 0, टी इंक्रीजिंग इंस्ट्रक्टिंग मोटिवेशन एंड ओनरशिप ऑफ लर्निंग, टी इट गारंटी परफेक्ट स्कोर, इट एलिमिनेट्स करिकुलम स्टैंडर्ड्स. राइट आंसर हो ऑप्शन बी ठीक है. ऑप्शन बी कोन अछि? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन अक्यूर्स एट होम विथ एप्लीकेशन हैपेंस इन क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, which concept describe students working together to achieve shared learning goal? Option C, competitive learning, cooperative collaborative learning, isolated learning, homogeneous lecture. कोटा कॉन्सेप्ट माने वर्णना करूची गोटे स्टूडेंटा निजर मिसिकरी जदि गोटे गोल बा गोटे लक्ष्य को पाई काम करिवो तेबे कोटा इतरे जाउची? राइट आंसर हो ऑप्शन बी, कोऑपरेटिव कहा जाय आको मिसी काम करवाटा कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव कहा जाय. ऑप्शन बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन चैलेंज टीचर फेस व्हेन ट्रांजिशन टू स्टूडेंट सेंटर मॉडल? स्टूडेंट्स स्टॉप टॉकिंग एंटायरली, relinquishing direct control and managing very learning process, finding standardized test, explaining why books are no longer allowed. Right answer of option B, relinquishing direct control and managing very learning process. Next question, inquiry based learning begin with. Inquiry based learning to आरंभ कौन? ऑप्शन सी, टीचर प्रोवाइड ऑल द आंसर्स, ए डायग्नोस्टिक स्टेट, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन प्रॉब्लम और सिनेरियो सैलेंट लीडिंग. राइट आंसर कौन हम ना? राइट आंसर हम ऑप्शन ए, टीचर प्रोवाइडिंग ऑल द आंसर, शिक्षक कहा दे देवे समस्त उत्तर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए लर्निंग सेंटर? लर्निंग सेंटर कौन? ऑप्शन सी, टू स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, ए डिजाइनेटेड क्लासरूम और ऑर्गेनाइजिंग अराउंड स्पेसिफिक टैक्स टॉपिक और स्किल, ए कंप्यूटर लैब और फाइनल एग्जामिनेशन, द टीचर लेक्चर एरिया. देखो टीचर सेंटर अर्थ है टीचर को हिसाब से चलो तेणु सॉरी लर्निंग सेंटर अर्थ है कौन? लर्निंग सेंटर अर्थ है डिजाइनेड क्लासरूम गोटे भल डिजाइन होता क्लासरूम और ऑर्गेनाइज अराउंड ए स्पेसिफिक टेक्स्ट टॉपिक और स्किल. तेणु गोटे निर्दिष्ट विषय थी कौशल थी हूँ लर्निंग सेंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट यूजिंग लर्निंग सेंटर? लर्निंग सेंटर लाभ कौन जदि यूज करूँ शिक्षार? ऑप्शन सी, इट अलाउ द टीचर टू लीव द रूम, it facilitated differentiation and students autonomy, it forces all students to work at the same speed, it eliminates lesson planning. Right answer of option B, it facilitated differentiation and students autonomy of the right answer. Next question, to make a learning center successful what must be provided? learning center को सफलता सह करिया पई
कौन देवा उचित ऑप्शन सी ए डिजिटल टाइमर मॉनिटर बाय प्रिंसिपल क्लियर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन एपियर ग्रेडिंग सीट कॉलेज लेवल टेक्स्ट बुक यार राइट आंसर कौन हम ना यार राइट आंसर हम ऑप्शन बी क्लियर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन गोटे पूरा संपूर्ण भल भाव सूचना देवाटा हूँ गोटे लर्निंग सेंटर सक्सेसफुल निहाती आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टीचर प्राइमरी रोल व्हाइल स्टूडेंट और वर्किंग इन लर्निंग सेंटर जदि काम करुवा बेले गोटे स्टूडेंट टीचर रोल कौन ऑप्शन डिलीवरिंग ए होल क्लास लेक्चर कंप्लीटिंग स्पेस पेपर वर्क्स फैसिलिटिंग ऑब्जर्विंग एंड प्रोवाइडिंग टारगेटेड सपोर्ट्स मेंटेनिंग कंप्लीट साइलेंस राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर हम ऑप्शन सी फैसिलिटिंग ऑब्जर्विंग और प्रोवाइडिंग टारगेट सपोर्ट यहाँ हूँ टीचर काम जिते बेले लर्निंग सेंटर टाइम रे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ लर्निंग सेंटर हेल्प स्टूडेंट्स मास्टर ए स्किल थ्रू रिपीटेटिव प्रैक्टिस को प्रकार शिक्षण रे गोटे छात्र निजर कौशल उत्तीर्ण थाए माने सक्सेस था बारंबार प्रैक्टिस करा पड़े को प्रकार शिक्षण कर ऑप्शन सी डिस्कवरी सेंटर एनरिचमेंट सेंटर प्रैक्टिस रिव्यू सेंटर रिमेडियन सेंटर आम जानी बारंबार प्रैक्टिस कर तेणु ऑप्शन सी प्रैक्टिस रिव्यू सेंटर हम ऑप्शन बी हम सी हम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एन एनरिचमेंट सेंटर यूज फॉर एनरिचमेंट कोटा यूज करा कोटा व्यवहार कर ऑप्शन सी स्टूडेंट डिसिप्लिन प्रोवाइडिंग एडवांस एक्सटेंशन एक्टिविटीज बेसिक रिमेडियल ड्रिल्स स्टोरेज ऑफ क्लासरूम सप्लाई राइट आंसर हम ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग एडवांस एक्सटेंशन एक्टिविटीज हम राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट मैनेजमेंट टूल हेल्प स्टूडेंट नो व्हिच लर्निंग सेंटर टू अटेंड ऑप्शन सी स्कूल बेल शेड्यूल रोटेशन चार्ट और डिजिटल स्टोरेज बोर्ड पॉप क्विज सेटिंग चार्ट राइट आंसर हम ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन बी राइट आंसर रोटेशन चार्ट और डिजिटल स्टोरेज बोर्ड हम राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ शुड ए टीचर एंश्योर अकाउंटेबिलिटी एट इंडिपेंडेंट लर्निंग सेंटर grasp everything immediately requires a complete text log or digital submission video record every station to students without evidence right answer कौन हम right answer हम option B require a completed text log or digital submission option B right answer। next question when organizing multiple learning center what is an important consideration option C price noisy center visits quit area separate noisy and quiet learning zones cluster or station one corner hide learning materials right answer of option B separate noisy and quiet learning zones। next question what is ideal way to introduce a learning center को introduce करा जे सबुठ भलो आइडिया काना आदर्श जिनिस काना ऑप्शन सी send students without explanation model activities practice routine and explain expectation provide only a written manual use it as a test on the first day right answer कौन हम ना right answer हम option B model the activities practice routine and explain expectation option B right answer। next question which type of learning center encourage student to manipulate material and discover concept को प्रकार लर्निंग सेंटर टा छात्र मान के डिस्कवर मान नुआ नुआ जिनिस करने उत्साहित दी था मैनिपुलेट करता है प्रेरणा दी था ऑप्शन सी टीचर्स लीड सेंटर डॉट मेमोरी सेंटर एक्सप्लोर डिस्कवरी सेंटर साइलेंट असेसमेंट स्टेशन कौन हम को प्रकार उत्साहित करता ना यार राइट आंसर हम ऑप्शन सी एक्सप्लोरेटरी डिस्कवरी सेंटर होता है ऑप्शन सी हम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर वन लर्निंग सेंटर कोटा ऑप्टिमल नंबर गोटे गोटे जिनिस देखुची बोले ऑप्शन सी 1 स्टूडेंट्स ओनली 3 6 स्टूडेंट 12 स्टूडेंट्स फॉर हाफ ऑफ द क्लास राइट आंसर हम ऑप्शन बी 3 ରୁ 6ଟା स्टूडेंट्स होता है 3 6 स्टूडेंट्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज क्वेश्चन शेष क्वेश्चन देखा व्हिच सेंटर फॉर्मेट रिमेन परमानेंटली इन द क्लासरूम व्हाइल इट मटेरियल चेंज अकॉर्डिंग टू द यूनिट को सेंटर
कौ सेंटर फॉर्मेटा सबुदिन जिते बेले गोटे क्लासरूम रो मटेरियल चेंज होची अकॉर्डिंग यूनिट हिसाब से ऑप्शन सी परमानेंट इंटरेस्ट सेंटर टेम्पोरी असेसमेंट सेंटर रिमेडिएशन सेंटर टीचर प्रेजेंटेशन स्टेज यार राइट आंसर कौन हम ना यार राइट आंसर हम ऑप्शन ए परमानेंट इंटरेस्ट सेंटर कह जाए। तो आज आम जो डायवर्सिटी ऑफ लर्निंग विषय 50टा एमसीक्यू प्रैक्टिस करा निहाती यह आपण मानक बहुत हेल्प कर तेज वीडियो केमी लगा निहाती मतामत देवे और आम चैनल जब प्रथम थर पाई तेज सब्सक्राइब करनी धन्यवाद।